आप सबकी भरपूर तालियों में CEO My Impact Meter Miss Kanwal Cheema, and the topic of the talk is digitalizing social impact. Assalamu alaikum everybody. My name is Kanwal Cheema. Digitalizing social impact में जाने से पहले I'll take a step back and let's kind of touch upon why social impact and why impact. आज आपसे थोड़ी देर पहले मैं आई थी और मैंने 2-3 presentations देखी हैं, very good content here. और जितनी भी presentations मैंने देखी हैं, they are kind of, telling you guys are very interested in listening because there's something that's in them for you guys. ठीक है, आपको growth के बारे में बताया जा रहा है, आपको hyper growth के बारे में बताया जा रहा है, आपको entrepreneurship के बारे में बताया जा रहा है, and this is all really good. आपको road map के बारे में बताया जा रहा है, which is, I feel like these are all essential tools to help you in your business, in your work, whatever you're doing. मगर अगर इससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाए and kind of reflect on why you're doing what you're doing, what is your pursuit in life overall, what is your core, what makes you you, what is your biggest motivation in life. मेरी journey, I was with Cisco. Cisco is a multi-billion-dollar company. It's a $160 billion company. I was with Cisco for 15 years. Most recently, I was a global director based out of Sydney and doing really well. But there was something which was nudging at me. जब आप पैसा कमा रहे होते हैं, पैसे की भी एक marginal जो वैल्यू होती है या मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स लेस एंड लेस. हाउ मच बेटर कैन यू ईट, हाउ मच बेटर कैन यू ड्राइव, हाउ मच बेटर कैन यू लिव. So there was still this thing inside me which was some sort of a gap, some sort of a what is missing kind of thing. ठीक है, and I questioned कि मैं जिंदगी में जो आई हूँ, so the life of a person, if you reflect really upon it, depending on what you believe, you might not believe that there's an afterlife, but the life of a person, if you do believe in that, which I'm sure most of us do here, is billions of years. Like your life is billions of years, and the life on this planet is, I don't know, 0.000001% of that. So very, very little. We're like dots. So if the life of the universe was like a year, we would be like, our life would be less than nanoseconds. We would be like dots that disappear even before we've had a chance to fully appear. We would be so quick to just disappear, right? तो क्या फायदा उस? I mean, what is it that, your dot, what was the purpose of it? And that is a question that each one of us has to ask ourselves. Do we want our dot to linger for a little while, even after we've left the world? What is it that our existence, because of us, we leave behind? Do we leave the world in a slightly better place because we came into it, right? And that is what impact is all about. What has been our impact in this world? That is what impact is. So, as I was going through the motions in life, I came across this story. I don't know how authentic it is, but it touched me, which was that a person comes to Hazrat Musa, and he says, I want everything that I'm supposed to be given ever till the end of my life, I want it today. So, Hazrat Musa ने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हें सारा कुछ आज मिल जाएगा तो बाकी ज़िंदगी में क्या करोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आज ही दे दे, जो भी मुझे मिलना है एंड तक, आज ही अल्लाह से सिफारिश करें कि आज ही मिल जाए. तो हज़रत मूसा ने उसको बड़ा समझाया, मगर वो ना समझा. तो फिर हज़रत मूसा ने सिफारिश की अल्लाह से और उसको उसका सारा रिस्क उसी दिन मिल गया.
अब वो बड़े परेशान भी थे कि अब क्या होगा। तो साल बाद जब वो उस बंदे से मिलने गए, उन्होंने सोचा कि ज़रा जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखा कि उसकी बहुत बड़ी एक कोठी है और बाहर बहुत सारी देगें हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो हज़रत मूसा उसके पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो सारा रिस्क मिल गया था, तो अब ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप ही के खुतबे में मैंने सुना था कि जब आप अपने रिस्क से देते हैं दूसरों को तो अल्लाह वो रिस्क बढ़ा देता है। तो मैंने वही फॉर्मूला अपनाया, मैंने सारा रिस्क मांग लिया, मैंने देना शुरू कर दिया, एंड देन इट मल्टीप्लाइड, राइट? सो I thought at that point in time कि मेरा pursuit, if it has to be pursuit of impact, if I want my dot to linger, and with this thing that I heard, I thought, well, जब आप किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर देते हैं तो क्या होता है? What did Uber do actually? Uber came in and completely digitalized the taxi industry. What did Airbnb do? Airbnb digitalized the hospitality industry. What happened because of that digitalization? The friction was removed. It became extremely frictionless to order a cab. And that whole industry became extremely frictionless, transparent, traceable. You can trace where you're going. Very trustworthy. आपको पहले से ही पता है आपने कितना किराया देना है. Nobody can dupe you. And very visible. And a lot of safety was brought into it. Yeah. So Netflix ने क्या किया? Netflix ने जो है वो देखा कि इसमें एक तो फ्रिक्शन रिमूव कर दी. सिटिंग इन योर हाउस यू कैन जस्ट वॉच एनीथिंग यू वांट. दूसरा, मैस कस्टमाइजेशन की. मैस कस्टमाइजेशन इज एन ऑक्सीमोरॉन. जो चीज मैस में होती है कस्टमाइज नहीं हो सकती, जो चीज कस्टमाइज हो सकती है और मैस में नहीं हो सकती. ठीक है. तो कभी अभी पहले थोड़ी कोई डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा था. जब आपने इनोवेशन करनी होती है, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की है. आई डिड माई MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड in Australia, and my topic of research was innovation. And I discovered that there are not many areas in which you can do innovation. There are only a couple. उसमें एक है making something extremely frictionless. दूसरा है mass customization. तीसरा है using latent capacity. Latent capacity Uber ने use की, where they said कि भाई घर में लोगों की गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, ठीक है, और वो इस्तेमाल, हाउ कैन वी ब्रिंग दोज कार्स विच आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन समबडीज हाउस इनटू अ बिजनेस मॉडल. लोगों के घरों में कमरे खाली पड़े हुए हैं. Airbnb ने सोचा कि लोगों के घरों में कमरे खाली पड़े हुए हैं, इन खाली कमरों, दिस इज लेटेंट कैपेसिटी, इन खाली कमरों को हम एक बिजनेस मॉडल के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं. ठीक है. तीसरा है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कॉस्ट टू डू समथिंग, कि आपके साथ कोई compete ना कर सके. You do it in such a way where people cannot really compete with you. And there are a couple of others. और फिर incremental innovations होती हैं. You improve the process somewhere, you do something better, incremental. But disruptive innovation जो है वो 7-8 बड़े areas में आप can break it down. ठीक है. So the other thing that was a big kind of eureka moment for me when I was doing that research, वो ये थी कि आप पिछले अरसे में, पुराने ज़माने में जब MBA लोग करते थे तो उनको बताया जाता था कि भाई कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कि शेप करते हैं मार्केट को, और वो जो करते हैं उससे मार्केट की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे. मगर पिछले 20 सालों में, पिछले 15 सालों में, 20 सालों में इस रिसर्च का कीमा निकल गया, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स आए जो कि बिल्कुल बड़े नहीं थे, जिन्होंने मार्केट को ऐसा डिसरप्ट किया कि मार्केट जो है वो इट डजंट इवन लुक द सेम एनीमोर. एंड हाउ डिड दे डू इट? द रीजन वाज टेक्नोलॉजी. Technology is such a big disruptor in itself that when you start digitalizing an industry or a sector, that sector वो बिल्कुल उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि आप उसको पहचान नहीं सकते उसके बाद. ठीक है. अगर आप नेटफ्लिक्स को देख लें, नेटफ्लिक्स ने
इस पहले आप जाते थे दुकान पे जाके एक मूवी रेंट करते थे, फिर आप घर लाते थे, फिर उसको देखते, फिर उसको जाके वापस करते थे, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व, ठीक है. मगर अब जो होता है इट इज कंप्लीटली डिसरप्टेड. So the point that I'm trying to make is that when you digitalize an industry, you can completely disrupt it. So it is extremely important to digitalize the social impact sector. अभी जब आप charity देते हैं, impact create करते हैं, philanthropy करते हैं, you don't know what happens to your money. You don't know कि आपका पैसा कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है. There is a lot of problem with trust and equitability. किसके पास जाता है? जो लोग मांगने वाले हैं उनको 10,000 लोग दे देते हैं. जो लोग मांगने वाले सफ़ेद पोश हैं उनको नहीं है, मांगने वाले उनको कोई भी नहीं देता, ठीक है. So there is a huge problem with equitability. दूसरा ये कि जो हमारी NGOs बेचारी हैं, हर एक को अलग अलग अपनी फंड रेजिंग करनी है, हर एक को अलग अलग बहुत कुछ. They're doing really great work, but it comes at a huge cost. Why can we not leverage technology to reduce that cost? Average जो $10 जब एनजीओ रेज करती है तो $3 लगाती है वो $10 रेज करने के लिए, ठीक है. और फिर दूसरा ये कि अभी जो हमारी सक्सेस मेजर होती है हर चीज में होती है, हमारी नेटवर्थ कितनी है, हम कौन है, हमारी नेटवर्थ कितनी है, हमारी डिग्रीज क्या है, हमारे टाइटल्स क्या है. मगर सक्सेस इज नॉट बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैव वी डन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड. हमारी नेट इम्पैक्ट वर्थ मेजर करने का कोई तरीका नहीं है. क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें टू मेजर आवर नेट इम्पैक्ट वर्थ. इंसान की सक्सेस देखें, सेकुलर सिस्टम की बात कर रही हूँ, रिलीजन में तो आपको सवाब मिलते हैं, दैट इज अ मेजर ऑफ सक्सेस. बट व्हाट अबाउट द सेकुलर वर्ल्ड? देयर इज नो मेजर ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इन द वर्ल्ड. देयर शुड बी. तो दैट्स काइंड ऑफ यू कैन लेवरेज टेक्नोलॉजी टू मेक दिस sector, the social philanthropic sector, instant, reliable and visible. With that kind of a motivation, you can gamify it, you can start measuring people's net impact worth. So what is needed really is a kind of that platform, an Uber, Netflix type of disruption in this sector. And that was the reason which motivated me to leave my very, very amazing job. Also, I became part of another founding company in the Silicon Valley, which is, mashallah, now worth $500 million. We've raised $96 million. But I still live in Pakistan, and I choose to live in Pakistan because this is my legacy. This is what I want my legacy to be. Pursuit of impact के अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आप उनको कैसे इस्तेमाल करके कोई impact create करें. And for me, my calling is to digitalize this industry. And that is what my impact meter is all about. ठीक है? My impact meter completely removes the friction from this industry. My impact meter makes it extremely visible where your money is going. We already were, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, I wanted to launch it in Pakistan. I wanted it to be a Pakistan success story, but it will eventually be a global platform. We're just testing it in Pakistan right now. I did not raise जानबूझ के रेस नहीं किया, हालांकि एक और कंपनी में 96 मिलियन रेस कर चुके हैं, मगर इसमें जानबूझ के इसलिए नहीं रेस किया क्योंकि जब आप रेस कर लेते हो, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो द मनी बिकम्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इन्वेस्टर्स वांट अ रिटर्न. सो वी हैवंट रेस्ड बिकॉज वी थॉट वेल लेट्स प्रूव द आइडियोलॉजी फर्स्ट, दिस इज पॉसिबल. क्योंकि जिस भी इन्वेस्टर के पास जा रहे थे ना, ये कैसे होगा, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे. सो दे वर किलिंग द आइडियोलॉजी ऑफ इट, which is why we decided to put our own money and bootstrap it instead. So this is available on Google Play Store, Apple App Store, and it's completely digitalizing the social impact sector. And I urge you, as my parting comment, because my time is over, I urge you guys to also find what your pursuit should be. Isko Japanese concept hai ikigai, where you combine what your passion is with what you're skilled at, with where you can make money, with what is good for the world. When you combine these four things, you find your purpose in life, and that should be your pursuit of impact. Thank you very much.